بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشنز نیٹورک ڈیو کام پاکستان کی طرف سے. میں ہوں منیر احمد اور میں اپنے تمام شرکاء پارٹیسپینٹس اور پینلسٹ کا شکر گزار ہوں. اور امید ہے کہ آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اٹ وڈ بی کم اپ ود سرٹن ریکمنڈیشنز جو ہم سب کے لیے وے فارورڈ ہوں گی آج کا. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ویبینار جو ہے اس کو ہم ایک خاص اینگل دے کے اس میں سے کچھ ایسی ریکمنڈیشنز نکالیں جو پریکٹیشنرز کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں. تو آج ہم بات کر رہے ہوں گے ایکو سسٹم ریسٹوریشن اس کے اوپر, اور یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا تھیم ہے. اور ہم نے اس کو تھوڑا سا جو اینگل دیا ہے وہ واٹر سیکیورٹی, واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی فار نیشنل سیکیورٹی, اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہوں گے. اور ہمارے پینلسٹ کی لسٹ تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. عاشق احمد خان صاحب سینئر سائنٹیفک ایڈوائزر ایوریسٹ ٹو CNR جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سامع قادر صاحبہ, شی ہیز لاٹ آف ایکسپیرینس ان ڈیولپمنٹ سیکٹر, وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. وہ اس وقت PFAN کی کنٹری ڈائریکٹر ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ آفتاب عالم خان صاحب, آفتاب احمد خان صاحب, آفتاب عالم خان صاحب ہیں, وہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہیں فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ چینج پہ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ظہور بازئی صاحب بلوچستان یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں, وہ انوائرمنٹلسٹ ہیں. اور کچھ سیما طاہر صاحبہ, جیسے انہوں نے کہا کہ شی از مور انوائرمنٹلسٹ اینڈ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہمارے ساتھ لیڈرشپ فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ فیلوز کے نیٹورک اظہر قریشی صاحب ہیں. اور اسی طرح UK سے ہمیں جوائن کیا ہے, if I can read her name, نگت حسنین, and she is also working on ecotourism. And there are so many. Arif Gohid Saab is also with us. He works with the کیا ہے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرتے ہیں, اور سینٹر کا نام میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں. تو یہ صورتحال ہے. اینڈ آئی ول ریکویسٹ ٹو بگن ود دس ویبینار since Ashik Ahmed Khan Saab is the most senior person and the senior scientific advisor Everest to CNR, and he has spent all his life into forestry, climate change, biospheres, ecological zones, and ecosystems, and so many other things. And I think that being a senior among us, I would request you to kick off webinar with your presentations. اور میری ایک کوشش کا میری خواہش یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں they have more buzzwords, they talk in buzzwords. تو اگر لے مین میں گفتگو کر لیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دوست سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے اس کو, تاکہ ان کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے اور وہ اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں. عاشق احمد صاحب, please unmute yourself and kick off the webinar with your presentation. Please go ahead, sir. Thank you so much. Although I don't have a formal presentation, I'll just start on the subject. اور جیسے آپ نے کہا کہ we have to be simple, so I'll try so. Ecosystem کے حوالے سے تو پہلے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم مطلب ہے کہ فوکس کیا ہوا ہے اس کے انوائرمنٹ ڈے کا. تو اپارٹ فرام اے سائنٹیفک ڈیفینیشن جو کہ بہت ہی ایک دوسرے کے اندر اتنی پیچیدگی میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ کئی سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی, تو سمپل ورڈز میں ان لوگوں کے لیے جو ایکالوجسٹ نہیں ہے, جس کے فیلڈ کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے, وہ یہی ہے کہ ہر ملک کے مختلف حصوں میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں کے کچھ فلورا, فونا, ہیبیٹیٹس وغیرہ اپیرنٹلی بھی یا سیمنگلی بھی سملر لگتے ہیں, فنکشن میں بھی وہ سملر ہوتے ہیں. تو اس جگہ کو اگر آپ سارے کو اٹھا لیں تو یہ ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے. اب کچھ تو بڑے بڑی ایکو سسٹم ہے اس پاکستان میں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ماؤنٹین ایکو سسٹم کا آپ کی تینوں ماؤنٹین رینجز پلس آل ادر جو 11 ماؤنٹین رینجز ہے, سارے کے سارے جو ہے ماؤنٹین ایکو سسٹم. لیکن پھر ہر ایک کے الگ الگ کیریکٹرسٹکس کی بنا پر یو کین ڈیوائڈ دیم اور سب ڈیوائڈ دیم انٹو مینی مور ایکو سسٹمز.
اور اس طرح ڈیزرٹس ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے ڈیزرٹس تو 5 ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف شکلیں، پھر چاغی سے لے کر ترپارکر تک جب میں گنتا جاؤں گا تو تقریباً کوئی 12-13 اس کے بن جاتے ہیں ایکو سسٹمز. And that is true about the coastal areas and the marine ecosystem and also some others. تو یہ تو ہوا اس کے بنیادی کانسیپٹ کہ یہ ایک جگہ ہے جو جس میں ایک ہی قسم کے آپس میں ملتے جلتے کچھ اینیملز اینڈ برڈز اینڈ ہیبیٹیٹس یہ ملتے ہیں، اور ان کا فنکشن بھی جو ہے تو سملر ہے، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، ناؤ ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایکو سسٹم میں وہاں کے رہنے والوں کے لیے کچھ چیزیں پیدا کی گئی ہیں جو ہر ایک کی نیڈ کو تو پورا کرتی ہیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ میں سوری عاشق احمد خان صاحب، تمام احباب سے پارٹیسپینٹس who have been entered into the meeting room, please mute your mic. وائلیشن پہ میں بہت تھوڑا کیلس ہوں، میں پھر ریموو کر دوں گا. تو یہ پلیز، کیونکہ وہ جو پینلسٹ ہیں ان کی گفتگو سننے میں بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو برائے مہربانی میوٹ رکھیں until you are asked to unmute yourself to talk about or to offer your comments. Thank you. Please go ahead, Ashik Ahmed Khan sahab. Yeah, thank you very much. اچھا، تو ہر ایکو سسٹم میں کمنگ ٹو دی ایکچوئل جو ٹاپک ہے آپ کا کہ کیسے جو ہے تو اس کی واٹر سیکیورٹی اور فوڈ سیکیورٹی اٹ از لنک ٹو دی نیشنل سیکیورٹی، اس طرف میں آ رہا ہوں کہ ہر ایکو سسٹم کے اندر there are things that meet the requirement of each and every person who is living there، لیکن گریڈ وہ چند ایک کی بھی نہیں پورے کر پاتا. ہمارا اصل مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ گریڈ کا آ جاتا ہے، نیڈ کا نہیں آتا. اب پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھو تو ہارڈلی آئی سی اینی ایکو سسٹم دیٹ از اسٹل ان ہیلدی کنڈیشن. کوئی ایکو سسٹم جو ہے ہیلدی کنڈیشن میں نہیں ہے. ہر ایک کے اوپر اتنی انٹرپشن ہو چکی ہے، اتنی ڈسٹربنس ہو چکی ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا. And when I say that it's not a natural condition and healthy condition, so what does it mean? The mean is that the ecosystem provide free services. اب وہ free services کیا ہیں؟ That is water, that is food, that is grass, that is this, that is that, and medicinal plants, blah, 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 blah. Many kind of things that are free for the human beings, that are free for the people who are living there. But it's up to the people who uses these things کہ اس کو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. Well, if they use it in a wise way, تو وہ سروسز کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جاری رہیں گے. If they use it in a bad way, تو وہ سسٹم آہستہ آہستہ بیٹھتا جا رہا ہے. اور آپ کو میں ایک آدھ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس دے دوں گا. آپ میں سے اکثر نتیہ گلی کی طرف گئے ہوں گے. اگر آپ لیفٹ روڈ کو دیکھیں جو سارا ریزرو فارسٹ ہے، جنگل سے بھرا ہوا، اگر رائٹ ہینڈ پر دیکھیں وائل آپ ایبٹ آباد سے آ رہے ہیں ٹوورڈز مری، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر جو جنگل ہے یہ ریزرو فارسٹ ہے، آپ کے رائٹ کے اوپر جو ہے یہ سارا گزارا فارسٹ ہے. اب گزارا فارسٹ میں آپ کو بہت توڑے توڑے درخت نظر آئیں گے، ورنہ لوگوں نے کاٹ دیا تقریباً. ایک ایکسپیریمنٹ جو آج سے 8-10 سال پہلے ہوا وہ یہ تھا کہ let us see the infiltration capacity of the soil under the forest area and under the denuded forest area. اچھا، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 26% انفلٹریشن کیپیسٹی ریڈیوس ہو گئی تھی اس ایریا کی جہاں سے جنگل کاٹ دیا گیا تھا. اٹ مینس کہ if we disturb the ecosystem تو ہم اس کو کسی بھی طرح ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اس میں ایک آدھ کو ریموو کریں. اب جنگل اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس ایریا میں جو کہ فارسٹ ایکو سسٹم، اس میں سے اگر جنگل ریموو کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکویفر میں پانی نہیں جائے گا. پانی نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کے چشمے سوکھ جائیں گے، آپ کو پانی نہیں ملے گا. اب جب ایک چھوٹے سے ایریا سے آپ شروع کرتے ہیں اور وہاں آپ اس طرح آتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو مطلب ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ایکویفر میں پانی چلا گیا یا نہیں، ختم ہو گیا. اب ناؤ اپلائی دس رول ٹو دی انٹائر ایکو سسٹم یا انٹائر لینڈسکیپ. اور بعض جگہوں میں چونکہ وہ بہت بڑے بڑے علاقے خالی کی گئے ہیں تو الٹیمیٹلی یو آر لیفٹ ود نتھنگ. اور
and that is true about everything. कुछ जगहों में मेडिसिनल प्लांट्स किसी जमाने में बहुतात में हुआ करते थे, नाउ दे आर नॉट. हाँ जी, क्योंकि लोगों ने जरा गलत इस्तेमाल उसका शुरू कर दिया. पास्चर्स का यही हाल है. हाँ जी, डेजर्ट्स में अगर आप ये देखें, हमारे डेजर्ट्स जो हैं मोस्टली दे आर ग्रीन डेजर्ट्स. वो डेजर्ट्स नहीं है जो कि हम देखते हैं बाज मुल्कों में. ये ग्रीन डेजर्ट्स हैं. दे आर फुल ऑफ फ्लावर्स, दे आर फुल ऑफ मेनी थिंग्स. बल्कि कुछ जगह तो ऐसी हैं, आप थर डेजर्ट की बात करें तो उसमें करुंजार हिल्स एक है इलाका. जो ही जुलाई अगस्त में बारिशें शुरू हो जाती हैं तो इट ब्लूम्स अप. इतने इसके ऊपर फ्लावर्स और मेडिसिनल प्लांट्स आ जाते हैं जो मेरा ख्याल है हम दर्द जैसी फैक्ट्री को वो पूरा साल फीड कर सकती हैं. तो दैट्स आवर डेजर्ट्स. तो हमारे डेजर्ट्स भी जो है तो दे आर ग्रीन डेजर्ट्स. और हम इसको इस तरह अगर मेंटेन कर पाए तो वो काम करते रहेंगे, नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे. वेल दरमियान में जो है तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर आता रहूंगा, लेकिन अभी जो है तो आई वुड लाइक माय अदर कोलीग्स टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स. और इसके बाद जो है तो इंशाल्लाह वी कंटिन्यू. हाँ जी, Okay, थैंक यू. okay. Thank you very much, Ashka Ahmed Khan Sahab, for introducing what ecosystems are and how they work and what role they play in supplying ecosystem services that that are free of cost, and that's why like we are exploiting them much more to जो हमारी जरूरत से ज्यादा हैं. Now I would request Saima Kadir Saiba, please go ahead and share your presentation. You have the, yeah, please go ahead. Thank you. Thank you very much. Unmute yourself if you're not. I'm unmuted. No, thank you. Okay, okay, thank you. Khan Sahab. And to continue with what Khan Sahab said, ecosystem restoration for food and water security is actually a matter of not only national survival, but human survival. And I will explain why. In this presentation, I'm going to give the overview of how ecosystem restoration and climate change and what Pakistan is facing are very connected. And then my esteemed colleagues who will come after me can go into more of some of the scientific details. So what does, and I'm taking your, by the way, lead, and zyadatar main Angrezi mein karungi for. Go, it's okay, it's okay. Practice international audience ek din aa jaye, inshallah. So what is an ecosystem? Why is it important? And why does it matter? Ecosystems are defined as the interaction between living organisms, plants, people, animals with their surroundings. This can be nature, but also human-made systems such as cities or farms. For example, जो हम सारे forest काट रहे हैं और urban growth कर रहे हैं, farming जो practices हमारी, उनकी ecosystems हमारे water quality, availability, food safety बहुत ज़्यादा effects हो रहे हैं. And why it matters is that ecosystems are the foundation of life on Earth, including human life. That's what we're fighting for. 4.7 million hectares of forest are lost annually globally. And everybody talks about climate change and reducing greenhouse gases and forestry destroy, but link nahi banate. Why does it matter? Eventually, if forest cutting, carbon emissions ko kam karna, the whole point is biodiversity in life. Because agar puri aapki web of life jo ek dusre ko services deti hai, connected hai, na ho, so then human life cannot survive on Earth. And ecosystems are major carbon sinks that are protecting us from climate change. And we are at a critical tipping point for climate change right now. And you've seen an example of that in the health sector right now. Ye jo COVID-19 hua is really a disastrous consequence of ecosystem loss, where there was rapid urbanization, cutting down forests, and species from habitat loss came into contact that normally would not have been contact in nature. Which was made worse by the Wuhan wet market. So species coming in touch close to each other that wouldn't have been in nature resulted in zoonotic transmission of COVID virus. So there are a lot of health impacts. You're already seeing dengue, malaria has increased in Pakistan, again, because of ecosystem loss.
So what we need to do as human beings is to restore and repair billions of hectares of land. And what it boils down to is so people can have access to food, clean water, and jobs. That's what is at stake. Pakistan is very blessed to have multiple unique ecosystems. This chart is from WWF, and out of 11 globally classified major ecosystems, 9 of them are found in Pakistan, and some of them unique to Pakistan. So once they're gone, they're gone. They're not coming back. Pakistan is one of the hardest hit countries by climate change. Our Himalayan glaciers are melting twice as fast since 2007 as they were in the 25 years previous. And this is caused by human-induced climate change. And according to IPCC estimates, our Himalayan glaciers are actually melting much more faster than expected. It is resulting in GLOFs, which are glacial lake outburst floods, which you're seeing a lot of in Gilgit-Baltistan, landslides, loss of bridges, infrastructure, basic services like internet. And this is not only in GB, but it's got impacts in the rest of Pakistan as well. The way we get our water is the Indus River is one of our major sources of water, and it gets its water by glaciers recharging. But because there is so much glacial melt, the glaciers are not able to recharge. And so there's not enough ice to melt in the following year to have enough water for Pakistan. Indus will no longer be an annual river very soon. Pakistan already is severely water stressed as per the Palmer Index. And depending on which estimate you believe, between 2025 and 2040, Pakistan will run out of water completely. And more than half of our water comes from this glacial melt. It will affect our electricity power sector. Your hydros will no longer have the base flows it needs. And so we will have more electricity shortages for hydro. There's a change in weather and monsoon patterns caused by glacial melt and climate change. This is resulting in increased frequency and severity of floods and droughts. And this in turn is affecting both our crops and food security, as well as water quality. When you don't have food to eat, when you don't have water to drink, what will happen? People will migrate. There will be mass migration and there's going to be conflict. There are going to be water wars coming in Pakistan. You already see it happening in some villages already. A global target of 1.5 degrees centigrade was set that climate change should not exceed this in the Paris Accords. It's not been met. We're going to exceed that, that is for sure. And some estimates are saying we are going to go to 4 to 6 degrees centigrade. This means that low-lying areas, especially coastal Balochistan, Sindh, are going to be decimated when this happens. On average, sea level rise of 8 inches has happened since 1880, with the last 3 inches gained only in the past 25 years. Every year, the seas rise 0.13 inches. Doesn't sound like much, but when you're in sea level, like Baden is in Sindh, or you saw the typhoon, it didn't even hit Pakistan directly, but we just got the side effects of it about 2 weeks ago, and areas were completely flooded in Sindh, and you had houses that were blown away. Melting glaciers can also affect the shape and gravitational field of Earth, which will cause regional sea level fluctuations. It will affect our communications infrastructure. When you have so much sea rise, obviously, and Pakistan is a tectonically active region, and with sediment compaction, you're going to have a localized subsidence of land, and this can wreak havoc with what you can grow and where. Higher sea levels are correlated with more dangerous hurricanes and typhoons. And we don't have much time left. Original estimates were that this will happen in 10 years, but actual data and studies that came out recently are showing we have only 6 years left to act. So we must act now. Other impacts in Pakistan include our forests will shift northwards to cooler areas, which will cause loss of biodiversity along with increased forest fires and pests, given that we have mixed use of land right now. Agroforestry and our agriculture will be impacted. When you have more glacial melt water going into the ocean is saline. The salinity will change, and surface and air temperatures will change. The currents will change. That will result in less fish breeding and protein availability in a country that badly needs protein as it's growing. And this will disproportionately affect coastal communities that depend on fisheries and protein for their livelihoods and food in Sindh and Balochistan. We will have increased natural disasters. Pakistan is already at the top of the list for malnutrition. According to the UN, 44% of our children under 5 years of age suffer from chronic malnutrition.
What this means is that not only their bodies, but their brains do not develop, which is a major loss to the nation of brain power. And this will only increase if we don't make our ecosystems climate resilient. It will also, in national security, create more potential for conflict, especially on the Siachen Glacier and other glaciers as they melt, on who's got rights to the area as they become more accessible, and mining rights, because there's a lot of valuable minerals underneath these glaciers. Here's just a picture of the Pasu Glacier, which connects Pakistan to China. It is shrinking, and all the villages that are downstream of it rely on its melt for their survival, and that is at risk right now. Pakistan is the third hardest hit country in the world in agriculture by climate change. Please unmute your mic like other than speaker if because we are hearing some voice, please. Thank you. So the impacts of Pakistan include shortening of growing season length, GSL. There will be heat stress at critical reproductive stages of plants. That means we will have increased crop failure and less yields of crops. There will be increased water requirements of crops. And this is a study that was done in the Arabian Journal of Geosciences, where a lot of this is coming in May 2020. Increased susceptibility to pests and diseases, and especially since we're doing monoculture, and if you use GMOs, even worse, if you don't use indigenous species. Increased crop loss due to severe droughts and floods. I've already talked about irregular rain patterns, irrigation water shortages. It's been estimated that crop yields will reduce from 6 to 18% in arid and semi-arid regions. This is already resulting in change in crop mix, and I will give an example of Sindh, and ultimately farmer profitability and related industry profitability. It's an economic risk. The projected increases in temperature in Punjab are 3 to 5 degrees centigrade, which are expected to result in reduction of crop yields of 6 to 16% per annum, respectively for cotton and sugarcane in Southeast Punjab. And it will have a terrible effect on poverty. Our most vulnerable communities are our smallholder farmers, and they form more than 80% of the total farming community. They will not have enough to eat or live on. So when I was at the World Bank, I actually pioneered the world's first ecosystem restoration schemes, specifically payments for environmental services schemes. And Costa Rica was a country that I had the privilege of working in, which is a real inspiration. It puts all its money into environment and ecotourism, education, and health. It has no army, and its citizens do very well as a result of that. So in payments for environmental services schemes, governments encourage maintenance of natural ecosystems, and they pay farmers and landowners to do that for environmentally friendly practices. There are 4 general categories of payments for environmental. Samia Kadir Sabha, may I interrupt you? And please, if you keep the example of Costa Rica for 3rd June webinar, where we have invited ecosystem restorations case studies from different countries. And sure, yeah, I think we should keep this case study, and it should be in detail. You will have 7 to 10 minutes to present the case study over there. We can include you in the panel for 3rd June. But I will just say why it is important for Pakistan. Ecosystems, yeah, please go ahead. Water, yeah, fuel, fiber, climate resilience, water regulation. If we don't have bees, we don't maintain our ecosystems. We won't have fruits, vegetables, and flowers. Those industries that need pollination. Soil formation and preservation and nutrient cycling for our agriculture. And I know, I think Seema works on ecotourism. It's great potential in our, especially GB in Balochistan and other places for ecotourism that also depends on this, and it can be paid for. But what it requires is people who value those services and are willing to pay for them. I will not go into any more detail on Costa Rica. Okay. So our own example in Southern Sindh, I'm working on a project in Khorva right now. And I think this should also go on 3rd June. This is again a case study of restoration. And if you like to give a glimpses of from this case study, please go ahead. Yes, very briefly. Yeah. Really important. I don't want to be all gloom and doom.
the message I want is that we need to take action now. Some things are beginning to happen in Pakistan. These are the kinds of things that are happening. So without going into all the details I had imagined going into, Southern Sindh is badly affected by climate change. There's very low-lying areas that get flooded. So the monsoon pattern has changed from June to July to October. They traditionally grew sugarcane, which they can no longer grow because of water shortages. And so they have switched to rice, and rice is environmentally more harmful to ecosystems. Sugarcane mills are underperforming and hiring less people. Jobs have been lost. So this project I'm working on in Khorva is doing a number of climate resilient practices that you can read on the slide. And so it's a matter, the message is make Pakistan climate resilient, restore our ecosystems. That's the only way to make that happen. And I have two requests. One, the way forward in Southern Sindh is if we have better monthly water management and allocation practices, especially in the dry season in December and May, then they can go back to growing sugarcane, which gives them 3 crops a year instead of the 1 crop a year that they're doing, and they're losing money. So the government needs to manage our water resources and pay more attention to efficient water allocation. It can help our sugar shortage. There are credit schemes that are needed for doing some of the work that is required. And I would have a humble request to Fauji Foundation and other fertilizer providers. We are ruining our ecosystems and soils by overuse of DAP and urea right now. And if we only apply what is needed, and there are ways of doing that that I was originally going to go into here, then we can save our soils and our crops and our profitability and both environment and economic security. I guess you will want me to go into this in the next presentation as well, the general way forward, what can be done. But I would say on one hand, in climate change, Pakistan needs to create a carbon market scheme. We can link to China, which already has multiple schemes, and those can pay the work that is needed for ecosystem restoration. And we are very lucky in that Islam is a religion which actually values water and environmental conservation, and it allows one to charge for it. So I think there's tremendous potential for Islamic finance, socially responsible investment products to help finance some of the work that's done and to create the incentives that are needed. So if you didn't hear anything else, the big picture main key takeaways I want is one, ecosystems are not in silos. So we should not work in silos. We need to work in an interdisciplinary manner. Everything is connected. We need an integrated ecosystems approach. And ecosystems don't care whether a river flows through India, Pakistan, Afghanistan, wherever, or between provinces. So we need a transboundary approach beyond provincial and national boundaries to manage both our food and water security. It needs a change in our culture. We don't value environment or water right now. So this is about individual level changes, conscious consumerism, and not to scare you, but the house is on fire, but we can save it, and we have 6 years to do something. Thank you. Thank you very much, Saima Qadir Sahaba, for your wonderful presentation and insight and the way forward that we need to adopt. And I was trying to find out your presentation on my email, but unfortunately I could not. Saima Qadir Sahaba, if you can forward it to, because I would like to include your way forward and recommendations into my media, press release. If you can do it. I will resend it. I sent it this morning, but I will resend it. Yeah. Yeah, but I could not find it. That's why I'm saying. No problem. Please, thank you so much. Thank you so much. Now, I would like to ask Dr. Zainab Ahmed. She is a visiting professor in the universities in Lahore, and she has done PhD on water security for national security. And I would request her to please tell us like how water security, how ecosystems ensure water security, and how water security ensure food security and national security. Please go ahead, Dr. Zainab Ahmed. जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब
First of all, it's a pleasure being here, and I'm so very grateful to you for giving me this opportunity. And its opportunity is also very valuable to listen to such esteemed scholars and such esteemed experts, and it's a great learning experience for me. My particular area for research on which I did my research is water security. And since the broader area of my academic broader area is international relations, so my research is concentrated on water issue in the context of Pakistan's international relation, for Pakistan's foreign policy, Pakistan's position on water in relation to its neighbors, transboundary water sharing. And the very important aspect which I want to highlight today is that the issue of water, the issue of ecology, it is not just an environmental issue. It has become a serious national security issue for Pakistan, which requires urgency, not on part of the state also, but also on the part of society, which is very important. I would like to share my brief presentation on which I'll be you can share your screen, please. It's enabled. Gee, thank you. I'm just doing it. Gee, can you please see it? Can you let me know? Yes, at the moment, yes. I think, Gee. yeah. इसको full screen कर लें. इसको full screen कर लें. Full screen कर लें, please. Just. Now I can see you, not your presentation. Gigi, I'm sharing it again. Just a minute. Gee, can you see it now? Yes, please. Okay, so the main area, the main point on which I want to emphasize is that how does the hydropolitics and issues of water governance, they hinder this ecosystem restoration in Pakistan? Sir, please, please unmute your mic. Whoever is speaking at the moment, I can't recognize the voice, but at the moment I can't see the window like who is speaking on with the guest speaker, please. Dr. Sabha, please go ahead. Gee, thank you. So the issue on which I want to emphasize is that how does this hydropolitics and the issues and the challenges of water governance, they have become a serious challenge for the water security in Pakistan. And in particular, when we talk about the ecosystem restoration, the concept of ecosystem restoration, one of the most important parts of this concept is freshwater ecosystem restorations. So Pakistan, a country which majorly relies on Indus River system, one river system which it has already shared, rather I would say divided the river system between India and Pakistan. So it already is a challenge for Pakistan to adequately and to sustainably manage its water resource, which is primary for Pakistan's society, its state, its economy, for the community development. So the major aspect which actually is a challenge today for Pakistan's water development is the politics of water, is the securitization Dr. Sabha, of water. I can only see your title of the presentation, and yes, I can see now water scarce nation. A very important quote, a phrase which I would like to share, and from which I want to start my presentation is, the
quote of William Young, who has been the expert of World Bank in Pakistan on water resources, that actually Pakistan is a water-rich country. If you look at the resources of water, they are so much in Pakistan that if we adequately manage them and utilize them, we are actually water-independent nation. What makes us water-scarce nation is actually to be looked upon. And if we look at the statistics, the very important few statistics, today the per capita water availability is just 908 cubic meters, which was 5,650 cubic meters in 1951. And today, if we see, 47% of population in Pakistan lives in the water scarce areas. These are different degrees of water scarcity that, and these are the few numbers I want to share, that what is the level of water stress, water scarcity, and absolute scarcity, that almost 8.9 million people in your country, they live in the areas of absolute water scarcity, which is certainly a biggest challenge for Pakistan. And this is, I just want to give a slight idea that this is the water resource, the major source of water resource, the Indus River system and its western tributaries on which we are relying today for our water availability, both the fresh water, the groundwater, almost 80% of it comes from the glacial melt and the rest from the rainfalls. So, and this river system actually, this maintains the underground aquifers and the groundwater, which we need to handle very smartly. When we talk about the hydropolitics of Pakistan, there are two angles of hydropolitics: the water sharing dispute with India, and number two, very importantly, which is the biggest challenge today, is the interprovincial water sharing disagreements. When we talk about the water sharing dispute with India, it particularly started from the partition, and which we try to locate this situation, that when did it start? It actually started with the partition of Punjab. And this map which I'm trying to show is the map which I located in Punjab archives. This is the map which was found by Pakistan government in 1948 from the locker of then governor of Punjab, who had gone back. But this was the first map which was showing some important information for the security arrangements for the evening of partition. And in this map, if you can see it, I am aware it's not that much clear, but if you can see that Firozpur district, where the headworks, Madhupur headworks, which control the link canals of Satluj, that was shown to be part of Punjab, which is now part of Pakistan. But later, what happened in the partition, this district was not given to Pakistan. That led to the immediate superiority of India in case of Pakistan, and which actually showed that how much Pakistan was vulnerable for its water needs, being the low riparian state. And immediately after partition in 1948, when India stopped water into the link canals of Satluj, Pakistan had to sign the inter-Dominion agreement by paying few seigniorage charges. A very important aspect to this is that the dispute, whatever the conflict was in South Asia on Kashmir between India and Pakistan, that was closely related to the origin of the water dispute. And the very known expert of water who had developed Tennessee Valley in USA, when he was brought in here and he studied this issue, he wrote that article, Kashmir, Another Korea in Making, that shed light on this issue, that if the transboundary water sharing dispute was not resolved between India and Pakistan, it could become a serious conflict in South Asia. And the solution he gave was that there was no other solution than the integrated water management, basin-wide integrated water management, because in case the division of the rivers, that would certainly disturb the river basin ecology. And when we look at the
problems today we are facing, that is very much related to the reality that the tributaries of Indus River system, the way it was divided between India and Pakistan, and the way the rivers have been diverted and the link canals are providing the water to other river basins, that has certainly disturbed the ecology of the river basins. In particular, if we talk about the Satluj River Basin, a very important example of this is Vihari district, which was one of the largest cotton producing districts. And government of Pakistan has conducted various studies that the effects on cotton crop, the effects on the groundwater, the quality and quantity of groundwater in that particular district, that has certainly been deteriorated by the disturbed ecology of Satluj River Basin. And that impact has been augmented by India's massive development of reservoir development in on River Chenab and Ravi in Kashmir. So this issue, although we achieved a landmark Indus Water Treaty, which has survived so many conflicts between India and Pakistan. But today, when we look back, certainly this treaty is a success. But today, in 2021, when we look at this entire scenario, Pakistan is one of the top 10 countries which are going to be badly affected by the impact of climate change. So this is the situation which also limits the role of Indus Water Treaty. The rapidly changing scenario of due to climate change. Then there is a very important factor when it comes to the disagreement on water sharing between the provinces among Pakistan, which Pakistan also inherited from partition, because this dispute between and disagreement between the provinces that was going on even before partition. So on transitional basis, the provinces were being managed under British government, but later after partition, Pakistan inherited the same problem, which was not dealt with under a proper agreement until 1991, but through water apportionment agreement. And although water apportionment agreement tried to divide the water share the water of Indus River system between the provinces, but still it has a lot of ambiguities. It still, despite of this agreement, there is a lot of disagreement among provinces. And during last 2-3 days, you have seen how Sindh, like every year, Sindh has blamed Punjab for water stealing. Balochistan has disagreements on water against Sindh. So every year this goes on. Why? Because of these lacunas and these issues in water apportionment agreement. And a very important factor is that what amount of water do we require below Kotri to maintain the marine life, and how much water should be drained into Arabian Sea. If we just look at the few statistics, the water resource strategy of 2002, that clearly said that Pakistan still had a room of 20 to 25 million acre feet of water development, which we were simply draining into Arabian Sea. On average, 25 million acre feet to 30 million acre feet of water every year is being drained into Arabian Sea, which certainly implicates our legal case also when we talk about India's reservoir development on rivers Chenab and Jhelum. Since we have this surplus water which we are unable to store and which we are unable to develop. So this implicates our legal case also internationally. What we need to drain below Kotri is a question. The water apportionment agreement did not give any figure, and it simply said that it could be settled among provinces. And Sindh just suggested a figure of 10 million acre feet. And
and after this, there was no study until 2005 when an international panel of experts, the Gonzalez report, it said that every year 5 million acre feet of water, if drained below Kotri, and 25 million acre feet of water once in 5 years would be enough to sustain marine life and Indus Delta. There are so many ecological problems in Indus Delta today. Dr. Saiba, Dr. Saiba, if I'm allowed to intervene, can you please make it a little brief? Now it's getting a little longer, I think. Yeah. Okay, sure. So when we talk about the challenges of water governance, one of the major challenges that the major surface water study conducted in Pakistan by the Chasti Main, it said that one major reservoir was required every decade in Pakistan. And after Mangla and Tarbela till date, we have been unable to develop any major reservoir. And then again, what amount of water we are draining into Arabian Sea. Then the very important thing is that the way we pursued our legal cases against India, in the case of Baglihar and Kishan Ganga, it had various loopholes legally and politically which weakened our case. And a very important thing is that when we are talking about water scarcity for last 20, 30 years, and we are in such a situation that when water per capita water availability would reach 500 cubic meters by 2040, we could not develop a national water policy until 2018. The national water policy, which was approved in 2018, it also talks about the sustainable use of water resources, the development of existing water resources, the augmentation of water resources. When we discuss and when we try to understand that what is the relationship of water security with ecosystem restorations, certainly a very important part of that concept of ecosystem restorations is freshwater ecosystem restoration, without which we cannot restore so many other parts of ecosystems. And another important part of this ecosystem restoration is mountain restoration, ocean restoration. So when we look at the water landscape of Pakistan, the reality is that we get water system into Indus River, water flow into Indus River majorly from the glacial melts, and we are draining it into Arabian Sea. So this all is so much related, and our coastal parts are under threat. What we did to the mangroves, what is being happened to Indus Delta, the sea incursion, this all is so much interrelated that without achieving the water security of fresh water resources and groundwater resources, we cannot restore the overall ecosystem. And unfortunately, there is no study of the groundwater resources of Pakistan at government level. And this all, a country of like Pakistan, where 90% of its water resources goes to agriculture, and agriculture contributes 20% to its GDP, you cannot achieve food security until you have achieved water security. And a very important aspect to this is integrated water management, which we need to achieve. That basin-wide integrated water management is very important, on which we need to bring an agreement among provinces also. What is the way forward? I think what I did in my research, that there is very important aspect is to create a public awareness among people, which can simply save you 11 million acre feet of water per annum. And what Indus we have today is the 3 western tributaries of Indus. It is very important to develop the basin of Indus of all these 3 tributaries. There should be an approach of basin-wide management. Then a very important thing is that we treat water as a public good. We do not treat it, we do not consider it as a private good. It's very important, and it's the appropriate time that we should treat water as a private good, and we should start billing water, without which we cannot develop water resources. And the reservoir and water supplies development, it is such a big investment
that the public sector and the international financial institutions, certainly they are not ready to invest so much in this, which will not generate that profit. So it's very important to develop this reservoir system and water supply system on the pattern of public-private partnership, which is very feasible method today, which can generate a lot of investment in this sector, and which can actually upgrade our water supply and water drainage system. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Zainab Ahmed, for your detailed and very comprehensive presentation. And you have stopped sharing your presentation. Thank you very much. And please unmute yourself. Yes, Nasir Gilani Saab is there. Thank you so much, sir. Finally, you can get connected. Your video and audio, आपकी आवाज आ गई है. Nasir Gilani Saab, I would request अभी मैं जरा आफ्ताब आलम खान साहब जो हमारे इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं, उनकी जरा सुन लें. आप चूंकि गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ फंड्स देने में और चीज़ों में और वाटर मैनेजमेंट पे और चीज़ों पे यू हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल. एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो. बड़े कुछ मेरे पास ना बड़े चुपते हुए और क्रिटिकल से सवाल भी हैं जिनके मैंने आपसे जवाब लेने हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त दूसरी दोस्तों से आई भी हैं. एंड आई होप लाइक यू हैव हर्ड दोज कंसर्न्स एज वेल. तो उसके ऊपर जरा तुसी जरा 2 मिनट ठहर जाओ, कड़ाके दे जवाब लेने ने तुहाडे कोलों. ठीक है सर. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आफ्ताब आलम खान साहब, who is international development consultant and food security and climate change. He has already shared his screen, and thank you very much. Without wasting time, please go ahead, Aftab Sahab. Assalamu alaikum. Thank you, Munir Saab, and assalamu alaikum to everybody, all very senior and learned people. मैं comments में देख रहा था कि मुनीर साहब की जो शुरू की रिक्वेस्ट थी उसको री-इन्फोर्स किया जा रहा है पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि उर्दू में बात की जाए. सो आई ट्राई टू बी इन उर्दू मोर. नहीं, अच्छी बात है सर. वो हमने तो कहा है कि बेशक इसको बाइलिंगुअल रख लें, लेकिन ये है कि अब असल में ज़्यादा लोग जो हैं वो अंग्रेजी में, आपको पता है, असल में फ्लो अब इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट. आप उर्दू में करें सर, उर्दू में करें. ऑप्शन इज ऑलवेज देयर. और थैंक यू जी, प्लीज गो वेरी मच. प्लीज गो अहेड. और मैं इससे पहले कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं. कुछ हमारे अहबाब जो हैं, मैं और आईटी का हमारा जो सपोर्ट है, वो उनको बार बार म्यूट करते हैं, वो फिर अनम्यूट खुद को कर लेते हैं, और मेरे पास फिर एक ही वो रह जाता है कि मैं उनको रिमूव कर दूं. क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे 1-2 अहबाब के साथ किया था. वो हमारे बड़े सीनियर दोस्त थे और फिर वो नाराज हो गए थे कि यार ये आपने क्या किया. तो बराए मेहरबानी म्यूट योर माइक्स until you are asked to unmute yourself. मैं उर्दू में बता दूं कि अपने अपने माइक बंद रखें, और ताकि जो स्पीकर बात कर रहे हैं उनकी बात हम सुन सकें. तो ये 2-3 आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, एंड मेरे आईटी वाले सपोर्ट ने कहा है कि जी इनको रिमूव कर दें. तो मैंने कहा यार अभी रहने दें, मैं उनको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. यू आर वेरी वैल्यूएबल टू अस. प्लीज गिव सम वैल्यू टू द स्पीकर्स एज वेल. थैंक यू सो मच. आफ्ताब साहब प्लीज गो अहेड. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. इकोलॉजी पे बात हम चूंकि कर रहे हैं तो जरा, हालांकि पहले बहुत लर्नेड पैनलिस्ट ने शेयर किया है, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट कि इकोलॉजी इज बेसिकली जो इंसानों, जानवरों. आफ्ताब, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इंट्रोडक्टरी चीजें हैं ना, आशिक साहब ने भी और बाकी अहबाब ने भी इस पे कर लिया है, तो इसको जरा स्किप ही कर दें. क्या कहते हैं आप? ठीक है, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी. थैंक यू. ये क्या कि बेसिकली ये आपस का रिलेशनशिप है तमाम चीजों का, और इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और उसकी रिस्पेक्ट के साथ बढ़ रहे हैं. ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पानी का मसला नहीं, ये जिंदगी का मसला है, ये अर्थ की सर्वाइवल का मसला है जिसमें हम सब शामिल हैं.
हमें क्यों चाहिए इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन फूड सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, that's the good beginning sir. जी, ये इसलिए चाहिए कि हमारी इकोलॉजी जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है और ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को हमारी मुतासिर कर रही है बल्कि फ्यूचर में मजीद ज्यादा भयानक सूरत इख्तियार कर सकती है, लिहाजा इस इकोलॉजी को रिस्टोर करना जरूरी है। और थोड़ी सी एग्जांपल कि किस तरीके से डिस्टॉर्ट हो रही है, कुछ चीजें पहले शेयर हो चुकी। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी एक बड़ी कॉज पिछले 200-300 सालों में एग्रीकल्चरल में जो चेंजेस आई हैं, जिसमें मोनोक्रॉपिंग बहुत ज्यादा हुई, एग्रोकेमिकल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, उसके नतीजे में एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करने में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा दखल है, तकरीबन 24% ग्रीन हाउस गैसेस एग्रीकल्चर की तरफ से शामिल होती हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक माहौलियाती तब्दीली का मसला दरपेश है। अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की तकरीबन मिला के 41 to 43.5% हैं। लैंड यूज और फॉरेस्ट्री को अगर इंक्रीज किया जाए, शामिल किया जाए, तो तकरीबन 6 से 7%, तो तकरीबन 50% हमारी ग्रीन हाउस गैसेस का एग्रीकल्चर से आ रहा है। ना सिर्फ ये कि एग्रीकल्चर एक इस तरह की जो सिचुएशन आजकल जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर हो रहा है वो ना सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में जिम्मेदार है, उसके दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा मुतासिर जो शोबे हैं उनमें भी एग्रीकल्चर सबसे आगे है, जिसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की ही मिसाल लें, ज्यादा नहीं जाते, पिछले साल की मिसाल लें, हमारे यहाँ 2020 की जो मॉनसून बारिशें थी वो नेशनली हमारी एवरेज 41% ज्यादा थी। फिर जो अगस्त की नेशनल एवरेज है वो 108% ज्यादा थी, जो सिंध में और ज्यादा थी। सिंध में तकरीबन 363% ज्यादा बारिशें हुई मॉनसून की पिछले साल अगस्त में, और इसी तरह बलूचिस्तान में अगस्त में 271% ज्यादा बारिशें हुई। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये वो बहुत से इलाके मुतासिर ज्यादातर होते हैं जहां पे गरीब ज्यादा हैं, जो फूड भी ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंध की अगर मिसाल लें तो पिछले साल तकरीबन 20 लाख लोग मुतासिर हुए और 10 लाख एकड़ जमीन पे फसलें जो हैं वो कॉटन, वेजिटेबल, प्याज, टमाटर और शुगर केन, गन्ने की मुतासिर हुई। तो जाहिर है ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी फूड सिक्योरिटी से। एक साल और पीछे अगर चले जाएं तो आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल में जो हमारे यहाँ बारिशें हुई नॉर्मली होती हैं उससे कई गुना ज्यादा बारिशें हुई, और उसमें हेल स्टॉर्म, जो यालाबारी बहुत ज्यादा हुई जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो तकरीबन 2 लाख जो हमारी गंदम थी वो मुतासिर हुई। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक टीवी शो में एक जिम्मेदार के साथ ये बात शेयर की गई तो उनका ख्याल था अच्छा 2 लाख है ना, हम 25 मिलियन टन पैदा करते हैं, 2 लाख की खैर है। लेकिन दैट लेड टू ए व्हीट फ्लोर क्राइसिस इन पाकिस्तान आफ्टर फ्यू मंथ्स। और आपको याद होगा ये क्राइसिस अपने पीक पे था जब दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 आया, और हमारी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि हम तकरीबन उतना ही जितना हमें नुकसान हुआ था उतना ही इंपोर्ट 1 लाख टन ज्यादा इंपोर्ट करने का डिसीजन किया। तो ये जाहिर है बहुत आगे की बात भी है, पीछे की वजूहात भी हैं, लेकिन हम इसमें से गुजर भी रहे हैं अभी फूड के जो प्रॉब्लम्स। ये एक मैंने बोरो किया है किसी रिपोर्ट से कि किस तरह इकोलॉजी जो है वो मुतासिर होती है, डिफरेंट शोबे आपस में कनेक्टेड हैं और मुतासिर होते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, एक दफा मैं जो ही दादू के करीब एक एरिया है वहां हम इसी तरह के कामों के सिलसिले में मौजूद थे, जहां फार्मर्स ने हमें बताया कि काफी अरसा पहले जोही का शहद बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ कॉटन पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे करना शुरू की तो तकरीबन पिछले 5-7 सालों में जोही का शहद मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया। उसका मतलब ये है कि वहां पे हजारों लोग उस शहद की इंडस्ट्री से मुंसलिक होंगे, जो उसकी आमदनी और फूड सिक्योरिटी से रिलेट कर रहे होंगे, जो डायरेक्टली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मुतासिर कर दिया। अगर हम सिंगल माइंडेडली सोचते रहेंगे तो हम इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे ओवरऑल हमारे माशरे में
نقصان آ جائیں گے. جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, جیسے ریمائنڈر کہ 4AS اگر کر لیا جائے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ فوڈ اویلیبل ہو, سفیشینٹلی پروڈیوس ہو رہا ہو, ایکسیسیبل ہو, ہمارے پاس اتنے آمدنی کے ذرائع ہوں اور فوڈ کی پرائس اتنی ہو کہ ہم اس سے خرید سکیں. ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. یہاں ہمارے پینلسٹ نے جی ایم اوز کی بات کی. اگر جی ایم اوز کسی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اس کے لیے آلٹرنیٹ ہونا چاہیے. ہمارے ہندو دوست اگر گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہتے, ان کے لیے دوسرا فوڈ اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور ایڈیکویٹ ہونا چاہیے مینز اس میں تمام ڈائیورسٹی نیوٹریشنل موجود ہونا چاہیے, اور یہ کوئی ایک وقت, ایک سیزن یا ایک سال کے لیے, لانگر پیریڈ آف ٹائم سسٹینیبل یہ چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے. سسٹینیبل ایگریکلچر کی بہت سی قسمیں ہیں جو نہ صرف کلائمیٹ چینج کے اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ایکولوجیکل ریسٹوریشن بھی کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ایگرو ایکولوجی, پرماکلچر, آرگینک ایگریکلچر, ایگرو فارسٹری, کنزرویشن ایگریکلچر. لیکن آج میں ذرا مختصر رکھتے ہوئے, میرا زیادہ تر چونکہ ایکسپیرینس ایگرو ایکولوجی کے حوالے سے ہے, تو تھوڑے سے ان کے پرنسپلز کے وہ کس طرح سے ایکولوجی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں میں بات کر کے اختتام کی طرف بڑھوں. یہ کچھ پرنسپل ہیں, 10 پرنسپل جو ایک میں نے رپورٹ ریسنٹلی لکھی اس میں سے میں نے بورو کیے ہیں. سو جب ہم ایکولوجی کی بات کرتے ہیں تو پہلا پرنسپل ہے لرننگ ود نیچر, کہ ہم نیچر سے سیکھیں اور نیچر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں, بجائے نیچر کو جو ہے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. پھر جینڈر ایکویٹی اور ویمن رائٹس. آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے بات کی کہ یہ انسانوں, پودوں, جانوروں اور تمام مائکرو آرگنزمز اور جو ایٹماسفیئر ہے اس کے ساتھ ملا کے پوری ایکولوجی بنتی ہے. اور جنرلی ہمارے ایگریکلچر پالیسیز اور پروگرامز میں عورتوں کو اگنور کیا جاتا ہے, لہٰذا ویمن رائٹس اور جینڈر ایکویٹی کو ہمیں سینٹر میں رکھنا ہوگا. انٹیگریشن آف لوکل نالج ود سائنٹیفک نالج. میرے بہت سے یہاں ایگریکلچرسٹ دوست بھی موجود ہوں گے, لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے جنرلی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسانوں کو, عورتوں اور مردوں کو شاید اتنا نہیں پتا ہوتا, جبکہ اگر ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو ہمارے علم میں آئے گا کہ ان کی نالج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے لوکل کانٹیکس میں. لہٰذا لوکل نالج کو سائنٹیفک نالج کے ساتھ اگر انٹیگریٹ کیا جائے گا تو ہم بہتر ایکولوجیکلی آگے بڑھ رہے ہوں گے. پھر سٹیپ بائی سٹیپ گریجول چینج. ہم نے اگر شفٹ کرنا ہے جو مین سٹریم ایگریکلچر ہے اس کو فوری طور پہ اگر ہم ایکولوجیکل ایگریکلچر کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مشکل ہوگا. ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گریجول طریقے سے موو کرنا پڑے گا. پھر کراپ ڈائیورسفیکیشن, پہلے بات ہو چکی کہ زیادہ سے زیادہ کراپس کو اگر ہم شامل کریں گے لوکل حالات کے مطابق تو نہ صرف اس سے نیوٹریشن کی ڈائیورسٹی آئے گی بلکہ ڈائیورسفیکیشن آلسو از این امپورٹنٹ سورس آف ریزیلینس اگینسٹ کلائمیٹ چینج. تو جتنی ڈائیورسفیکیشن ہوگی اتنی ریزیلینس ہوگی, جتنی مونو کراپنگ ہوگی اتنی ریزیلینس میں کمی ہوگی. سوئل کنزرویشن, یہاں پہلے بات تھی, سوئل کو بھی ہمیں ایک جاندار کے طور پہ ٹریٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی سانس لیتا ہے, اس کے اندر بھی مائکرو آرگنزم ہے, اس کے اندر بھی خوراک ہے. اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کا خیال نہیں رکھیں گے ایکولوجیکل طریقے سے تو ہم جو ہے پوری ایکویشن کو کور نہیں کر رہے ہوں گے. سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ کی آلریڈی کافی تفصیل سے زینب نے بات کی. تو ایگرو بایو ڈائیورسٹی پریزرویشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے سیڈز جو ہیں وہ ہمارے اس وقت متروک ہو گئے ہیں, کس طرح سے ان کو ریوائیو کیا جائے یہ ایک سینٹرل پلر رکھنا پڑے گا, اور دنیا میں بہت سی ایگزامپلز اس کی موجود ہیں. پروسیسنگ اینڈ ایکسیس ٹو مارکیٹ, صرف پیداوار تک نہیں, پیداوار کے باہر بھی جب ہم پروسیسنگ کریں گے تو ہمیں ایکولوجی کا خیال رکھنا پڑے گا. میں نے شروع میں جب ذکر کیا تھا کہ 24% جو ہے وہ ایگریکلچر گلوبلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, لیکن بہت سی آرگنائزیشنز نے جب اس ایگریکلچر کے اندر فیول کا استعمال, اس کے اندر مشینری کا استعمال اور ان کے نتیجے میں جو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں, جب ان کو شامل کیا تو یہ جو فگر ہے گلوبلی ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن کی یہ تقریباً 45 سے 50% تک بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں ان تمام معاملات میں بھی پروڈکشن کے بعد بھی ایکولوجی کو مد نظر رکھنا پڑے گا. پھر کیمپیننگ فار پالیسی چینج, جتنی بھی پیچھے باتیں ہوئیں یہ صرف ایک آرگنائزیشن, ایک یونیورسٹی نہیں کر سکتی, وہ پائلٹ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وائڈر اسکیل پہ اپلائی کرنے کے لیے, بڑی چینج لانے کے لیے, پالیسی چینج کے لیے کیمپیننگ کرنی پڑے.
कुछ आखिरी स्लाइड है कि रिकमेंडेशन या सजेशन जो है, हमें पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को, जिसमें हम इकोलॉजिकल रीजनरेशन को इंटीग्रेट कर सकें। रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एंड थिंक टैंक्स में देख रहा था, कमेंट में आया कि यूनिवर्सिटीज रिसर्चेस करती हैं, बिल्कुल करती हैं, हजारों थीसिस अगर पाकिस्तान में हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें दो प्रॉब्लम है। एक तो उनका एक्सेस बहुत मुश्किल है, जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज के पेपर्स, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स, चीजें मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, कम होते हैं। लेकिन हमें इनकी डायरेक्शन को भी ठीक करना पड़ेगा ताकि प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं उनको अपनी रिसर्च में सामने लेके आना पड़ेगा और उनको हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्फीयर में सामने करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बहुत से शोबे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। अगर हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। दे आर सपोजिटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद फार्मर्स, और उनको मशवरे देने के उनका काम होना चाहिए, जो अब बहुत हद तक कम हो गया है। और जहां है भी वो कितना इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पे है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। पिछले दिनों मेरे एक सीनियर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि इस वक्त ऑर्गेनाइज तरीके से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन या क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की प्लान में या उनकी ट्रेनिंग्स में शामिल नहीं है। फिर women and men farming communities to be empowered and engaged, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बजाय ये कि उनको ये समझ के जाएं कि उनके कुछ इल्म में नहीं है, हम जाके उनको समझाएंगे और बढ़ाएंगे। उनकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें इंगेज जब किया जाता है, तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की जा सकती है, और जिसके जरिए ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है बल्कि इनकम जनरेशन भी की जा सकती है, और लॉन्ग लाइफ जो इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मेनी अदर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज उनको कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम खान साहब for your wonderful presentation and insight to the reasons that we are facing food insecurity and how we can ensure food security using ecosystem. Thank you very much. Now I would go to our last panelist, and he is Nasir Gilani Sahab, former Chief Water and Food Security with Planning Commission of Pakistan. Nasir Gilani Sahab, are you there? Nasir Gilani Sahab. Nasir Gilani Sahab. Nasir Gilani Sahab, until you prepare yourself to come, आप ऑनलाइन तो हैं, फिर आप सुन नहीं रहे हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी वीडियो भी. Meanwhile, I would like to recognize a couple of more friends and experts who have joined us. Zagam Khan Sahaba, she is a water expert and a wonderful speaker. बहुत सारी research है water resources के ऊपर इनकी, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है. रिफत आरा हमें इन्होंने ज्वाइन किया है. She is a wonderful fine arts teacher. She has been with the leading schools of teaching Cambridge art and design in Islamabad. और हमें ज्वाइन किया परवेज साहब ने, और काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. नसीर गिलानी साहब, कैन यू हियर मी? Okay. Tahir Imran Sahab, are you there? Tahir Imran Sahab. नसीर गिलानी साहब ने कहीं म्यूट ना किया हुआ? नहीं, नसीर गिलानी साहब मुझे लगता है कि अपने आप को यहाँ रख के ना तो किसी और काम में मसरूफ हो गए हैं. बहरहाल हम उनको ले लेंगे. मीनवाइल यहाँ पे कोई चंद और अहबाब भी मौजूद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं. Seema Tahir Sahaba, she is environmentalist. We have seen her wonderful interventions in Karachi and surroundings and in Sindh, और इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने बात भी करती रहती हैं और प्रोपेगेट करती हैं पॉलिसी इंटरवेंशंस के लिए. सीमा ताहिर साहबा, डू यू लिसन? डू यू लिसन मी? सीमा ताहिर साहबा भी हमें, सीमा ताहिर साहबा अगर आप सुन रही हैं, फिर हमारे साथ, यस,
सीमा ताहिर साहब इज देयर, और आवाज आई थी फिर बंद हो गई. Can you hear me now? Yes, I can hear you, ma'am. जरा थोड़ा सा जो टॉपिक से रिलेटेड कि ये अभी इतनी सारी बातें हुई हैं, बात हुई है कि एक बार फिर जो है वो एतराज हो रहा है सिंध को, इसी के ऊपर वो हमेशा होता भी रहता है. हमारे एक दोस्त जो हैं उन्होंने इसके ऊपर जब बात हुई काफी वक्त पहले, वो कह रहे यार आप हमें हमारा पानी दे दें, हम बेशक समंदर में डाल दें, मतलब इस्तेमाल ना हो कहीं पे भी. लेकिन ये जो इकोसिस्टम्स जो हैं, आप ट्री प्लांटेशन वगैरह भी होती रहती है, अवेयरनेस रेजिंग भी होती रहती है, लेकिन हमने देखा है कि सिंध के अंदर जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर कोई अभी हालांकि मिसाल इन्होंने दी है, उन्होंने प्रेजेंट किया केस स्टडी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वहां पे ऐसी कोई सूरत हाल हमें हौसला अफजा नजर नहीं आ रही. तो क्या आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और सिविल सोसाइटी का कोई आपस में कोई कोलैबोरेशन है, नहीं है? जी मनीष साहब, आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल द, जी मैं आपके सारे प्रेजेंटर्स का बड़ी गौर से सुन रही थी. मैं जो मैंने हैवंट गॉट एन एजेंडा और समथिंग, मगर मैं मोटी मोटी बातें करना चाहती हूँ पहले. यस, देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड प्लान, there is no organized body that can work exclusively on environment and on water security, which also leads to food security. So we have a climate change ministry bhi hai, and the climate change minister is very very active. और इस वक्त बहुत सारी चीजें recognize हो रही हैं. I'd like to talk on अगर मैं शुरू से बात करूं तो 10-12 पॉइंट्स हैं जो मोटी मोटी I'll try and just बुलेट में उस पे बात करूं. जहां तक हमारे पानी का ताल्लुक है, जहां तक हमारी इकोसिस्टम की जो आप बात कर रहे हैं ना, यस 11 इकोसिस्टम्स एंड ऑल ऑफ देम डिग्रेड हो रहे हैं. वी हैव द डेल्टा व्हिच इज ऑलमोस्ट डेड, व्हिच इज लॉस्ट. इसी तरह से हमारे और नेचुरल इकोसिस्टम्स थे, और वी हैव अ वेरी डाइवर्स कंट्री with the diverse landscape, and we were one of the, as the speakers have said, ke we were a water rich country. मगर आज क्यों ये हालत आ गई है कि और agricultural produce हमारे 60s में इतनी जबरदस्त थी. We had the silver fiber, cotton, all that. Everyone knows about that. मुझसे बहुत बड़े experts हैं, specialists हैं, so I won't elaborate on that. सबसे पहले जहां तक हमारा Department of Statistics, Pakistan's Department of Statistics है, where all data collection and analysis of data is happening. We need to know if that is equipped to handle today's situation of climate change. जो variabilities आ रही हैं in water flows, जो variabilities आ रही हैं in the entire infrastructure, the bio हमारी जो पूरी चीज बदल रही है, उसके लिए हमारे पास क्या, do we have modern infrastructure tools and specialists who can analyze? Do we have those systems which can collect the right amount of data, and do we have those analysts who can analyze and compartmentalize and release that data? So अगर हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, जहाँ हमारी स्नो मेल्ट, we don't know the rate of snow melt today. We don't know the rate of जो हमारे पास system है that is not equipped to handle, वो assessment कर रहे हैं, वो आपको exact figures नहीं दे रहे. So what you need to do is a multi-system approach. So I'll leave it at that, कि multi-system approach होगी और collect statistics और data आपके पास आएंगे, उसका collect system of analysis होगा, और उसको dispense करने के लिए कुछ security issues भी होते हैं, कुछ national concerns भी होती हैं, but all these should be addressed कि कितना data किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए.
दूसरे जो हमारे लॉज बने हुए हैं, हम बात करते हैं कि हमारा वाटर अकॉर्ड जो इंडिया के साथ हुआ 60s में, सतलुज की बात है कि सतलुज चला गया हमारा और रावी और चनाब भी अफेक्ट हो गए, तो वो अकॉर्ड needs to be revisited and revised in by experts. जब हम जाते हैं वर्ल्ड कोर्ट में, हेग गए या जहां भी गए, हमने अपना केस प्रेजेंट किया, did we include the PhDs, the experts, the geographers and the hydrologists in that? Did we include all 360 a team of people who could manage the whole question and answer session? I'm sorry to say, but India came in with experts who could challenge every question that we did, but we were unable to answer those questions. So the जो हमारी backdoor diplomacy या हमारी water meetings होती हैं, जो कुछ भी होता है हम पाकिस्तान की तरफ से, I think we need to be a little more dynamic in every time we sit across the table, wherever we sit across the table, we need to be a little more dynamic and contemporary information हमारे हाथ में होनी चाहिए when we talk. अगर हम ये कहते हैं कि उन्होंने इतने डैम्स बना लिए और उन्होंने इतने रिजर्वायर्स बना लिए, तो उसमें हमने नहीं किया ये, हमने उससे बहुत कम एफर्ट किया इन स्टोरेज ऑफ वाटर. दूसरी बात ये है कि हमारा जो the three kinds of water that we have the fresh water, which is rainfall and river water, and then we have the groundwater, we have the grey water and the brown water. Now हमारे पास इसका कोई definite estimations or evaluations नहीं है पानी के. पानी का जो ground water है, it was said that we had the largest aquifers in Asia, and sometimes they say the largest in the world. I don't know the real figures and I don't know the real geographical significance of that, but we had a lot of water at hand. How we have used it over the many years is a question. We had in 1960s जब अयूब खान का दौर था, तो उन्होंने जाके अमेरिका में जब सैलिनिटी राइज कर रही थी और हमें उसका हमें एक सॉल्यूशन चाहिए था, सो एक्सपर्ट्स फ्रॉम एक अमेरिकन कंपनी थी स्काप, वो आए और उन्होंने कहा उसका सॉल्यूशन है ट्यूब वेल्स. नाउ ट्यूब वेल्स उन्होंने बताया था कि दैट विल you can pump up groundwater, or that will help in diluting the salinity as well. I'm not being 100% accurate about it, but this was research was done and papers were written, and we joined hands with SCARP to start the tube well network across, because irrigation system हमारा बना हुआ 200 साल पुराना, वो inadequate था for a rising population. So when we went into tube wells, उस पर हमें शुरू दिन से ये चाहिए था कि हम उसके ऊपर कोई tariff and cost to that water लगाएं. एक I'll go back to the premium subject of water as a right of human beings, as a right of all citizens. This was stated by the Supreme Court. This became a law that the water of Pakistan belongs to the people of Pakistan. It is the right of every citizen. हमारे यहाँ land reforms नहीं आए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ allocation of lands was as per the British awards, as per the landlords here, the powerful landlords who could add to their lands through muscle and through pressures and through influences. Whatever that was, I do not want to challenge that, but what I'm saying is the water that was on the underground water, and it was on a certain land, certainly did not belong to the people who lived there, to the landlords who lived there. The citizens of Pakistan had the right to that water. So जो हमारे यहाँ एक चीज कभी भी नहीं हुई कि आपने अपना आबियाना तो एक वो कर लिया कि आबियाना payments must be made. That amount is a ridiculously small amount. But what about the excessive usage and excessive extraction
of the groundwater. Right. Uski wajah se ye hua hai, too many tube wells came up, thousands and thousands and thousands of tube wells came up. Extraction of groundwater became free for all, which should have been looked at as water as a commodity. Water pricing should have been done, permits and licensing, and the time for which water can be sucked up should have been clearly defined. Right. So the laws on water, Hamare Pakistan ke laws, whether it comes from the federal or whether after devolution, who has the power for water security must be redefined, must be rewritten in terms of environment and in terms of governance. Okay. So I'll just take and I know this will not be welcomed by a lot of people, but as I said, I may not be an expert, but I am just an activist. Again, when we come to the water appropriation accord, it was done in 1991. Uske baad bhi you don't know the variability of flows. So how can you say ke kitna allocate karna chahiye, kisko kitna distribution karna chahiye? Sure, ma'am. So, and that affects agriculture. Or agriculture mein ab what we need to see is this is a time for a turnaround. This is a time for rethink of agricultural practices. We need a revolution, a green revolution in agriculture. We need to go into permaculture. We need to go into hydroponics. We need to go into different techniques of water conservation and different techniques of soil health. And we need seed banks for better quality seeds. Okay. So we need to go into the natural ways of agriculture now, where we do not need fertilizer and where we can use techniques that save water. Hamari yield bhi badhegi. ठीक है जी, I'm sorry, but that's no problem. It's wonderful to listen to you, and if you are finished, ma'am. That's what I say. There's still hope. We have 6 years. Okay. We need to, and then media must play a very, very important role, and voices must be raised, and the urgency of Wake Up Pakistan, wake up to our eco needs, wake up to our environmental needs, wake up to our water issues. And we need bold steps, we need clear-cut methodologies, and we need way forwards. Thank you very much, Sima Tahir Sahaba, for your wonderful presentation. And through your whatever you said is the language of activists, and definitely we need much more activists because they become voice of the experts and practitioners, like who come up with certain body of knowledge and information, and activists try to rather push the policy change and actions. And one is the policy that needs push, that is National Water Policy 2018, that is dusting shelves. And we need to get that policy out, and it's a very comprehensive policy. I have gone through it, and while it was being drafted, and I was also was part of it, but unfortunately, despite different push और like बहुत सारी जो दरखास्तें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को की गई, लेकिन वो कहीं से बाहर नहीं निकल रही, और ये समझ में नहीं आता है कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, ये आई डोंट नो, ये होती हैं, पैदा की जाती हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ वाटर और मुख्तलिफ उनकी जिम्मेदारियां रही हैं। नसीर गिलानी साहब अगर हमारे साथ हैं और वो इस वक्त दोबारा माइक म्यूट और वीडियो म्यूट करके कहीं चले तो नहीं गई हैं। नसीर गिलानी साहब, आर यू देयर? नसीर गिलानी साहब, आर यू देयर? प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहले भी हमने आपके नाम के काफी नारे शारे मारे हैं, लेकिन आप बिल्कुल मेरे ख्याल अब तो शायद वो निकल भी गए हैं। ओके फाइन। हमारे साथ आरिफ गोहीर साहब भी हैं और
मैं इनके इदारे का नाम भूल रहा था, ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर से हैं, इज अ वंडरफुल फ्रेंड एंड एनवायरमेंटलिस्ट। आरिफ गौहीर साहब, आप हैं हमारे साथ अभी कि नहीं हैं? आरिफ गौहीर साहब, ओके। डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब हैं बलूचिस्तान में, ये अभी ट्यूबवेल्स की बात हो रही थी डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब, और आपने देखा कि बलूचिस्तान में कोई सोलर ट्यूबवेल्स का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आपकी तो जो वहाँ पे कारेज सिस्टम जो था वो सारे का सारा बैठ गया। जब कारेज सिस्टम बैठ जाएगा और इतनी ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर हो रही होगी ट्यूबवेल्स की, जरा कुछ सूरत हाल जरा ब्रीफली बताइए, क्योंकि आई हैव सम अदर एक्सपर्ट्स एज वेल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसको हमने बर वक्त खत्म भी करना है। प्लीज डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब। इंडीड सूरत हाल बलूचिस्तान में पानी के हवाले से बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जो पहले की प्रेजेंटेशंस थी खासतौर पे मिस साइमा की, वो तो ठीक ठाक हमें डरा दिया गया, वेरी स्केरी थी। लेकिन अगर बलूचिस्तान की हालत आपको बताऊं, एक प्रोफाइल बनाई थी डच गवर्नमेंट ने वाटर के हवाले से, एनवायरमेंटल प्रोफाइल बलूचिस्तान, बल्कि खासतौर पे कोयटा सिटी की, और ये बनी है 1991 में। आप सुन के हैरान होंगे कि उसमें सिर्फ ये रिकमेंड किया गया था कि पूरे कोयटा शहर में 200 के करीब ट्यूबवेल्स होने चाहिए, और अगर मैं इस वक्त आपको ये कहूँ कि हजारों ट्यूबवेल्स हैं तो ये गलत नहीं होगा। और कोयटा शहर का पानी 1200 फीट से भी नीचे चला गया। सिचुएशन न सिर्फ कोयटा शहर की ऐसी है, बल्कि अगर आप पूरे बलूचिस्तान में देखें तो जो अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की सिचुएशन है, वो पानी इतनी तेजी से लोगों ने निकाला है और एग्रीकल्चर क्रॉप्स की तरफ गए हैं। और इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान का आपको पता है कि ये हमारा 90% एरिया रेंज लैंड है, और रेंज लैंड को लोगों ने अपने माल मवेशी शिफ्ट करके, आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, के लोग रेंज लैंड से लाइव स्टॉक से शिफ्ट होके हॉर्टिकल्चर की तरफ आए। और बलूचिस्तान में जो सेब खासतौर पे ज़ियारत का है, तो ज़ियारत में सेब जैसे क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया। और अंडरग्राउंड वाटर को ख़त्म करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, हम सब जानते हैं कि ट्यूबवेल के इस्तेमाल के लिए जो सब्सिडी दी गई थी, जैसे फ्लैट रेट वापडा ने 5000 रुपये आप मीटर का पे करते रहें और पूरा महीना बिजली यूज करते रहें, तो लोगों ने उसको भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया और पानी की सिचुएशन बहुत बुरी है। आई गेस दैट्स इट। चूंकि आपके पास टाइम कम है और we can discuss it later on. Thank you अच्छा very much. डॉक्टर जहूर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या हल क्या नजर आता है? वो 12,000 ट्यूबवेल्स बन गए और सारा कुछ कर लिया वहां पे, अब नुकसान जो इतना हो गया है, अब क्या उसके जो इकोसिस्टम्स का जो इस कारेज ना होने की वजह से, पानी ना होने वजह की जो सूरत हाल बन गई है, सिचुएशन तो आपने बता दी, हल क्या है? देखिए मुनीर साहब, 2000 साल पहले जितना पानी दुनिया में था आज भी उतना ही है, लेकिन उसकी जो हम ओवरऑल वाटर साइकिल की बात करते हैं, उसमें पानी जमीन से एवेपोरेट होकर आपके एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर बारिशें बरसती हैं। अब एक होप तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में, या बल्कि अब भी हो रहा है, कि वाटर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत चेंज हो गई है। वो एरियाज जो एरिड जोन में आते थे, खासतौर पे बलूचिस्तान के बहुत से एरियाज जहाँ पे 250 मिलीमीटर से नीचे बारिश होती है, वहां पे अब अगर आप एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से नसीर गिलानी साहब, डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब जरा अपना बात मुकम्मल कर लें तो फिर आपकी तरफ आते हैं। जी तो एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद फ्यूचर में बलूचिस्तान जैसे एरिड एरिया के लिए हो, कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी। नसीर गिलानी बोल रहा हूँ। जी आपकी आवाज नसीर गिलानी साहब हमें आ रही है। नसीर गिलानी साहब, आपकी आवाज आ रही है हमें, और जरा डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब डॉक्टर जहूर बाज़ई साहब अपनी बात पूरी कर लें तो आप फिर आपको मैं ज़हमत देता हूँ। जी मुझे बताइए कि 5 मिनट में या 10 मिनट में? सर एक चंद सेकंड्स में। सर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ, ओनली फ्यू सेकंड्स प्लीज। मुनीर साहब आई गेस कि मैं उनको बात करने का मौका देता हूँ, वो शायद कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है।
नहीं Please नहीं go नहीं ahead, नहीं Gilani नहीं sahab. वो Gilani असल sahab, में please he go was ahead. पैनलिस्ट, वो 2-3 दफा हम उनसे रिक्वेस्ट कर चुके। जी नसीर गिलानी साहब प्लीज गो अहेड। ये एक अभी हम बात कर रहे थे, नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में आई थी और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला वो किधर गई, और आप प्लानिंग कमीशन में भी रहे हैं और अभी भी आप इसी हवाले से काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हुकूमत के लोग जो हैं, चले जब हुकूमत में होते हैं तब तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो आप हुकूमत से बाहर हैं, तो ये क्या वजूहात होती हैं? आप पॉलिसीज बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं जाती? जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, 2018 से पड़ी हुई है और इसको बनाने में कम से कम 2.5-3 साल लगे थे। गिलानी साहब, गिलानी साहब आपका कोई साउंड सिस्टम का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज गो अहेड सर। नसीर गिलानी साहब, नसीर गिलानी साहब गो अहेड। अब ये बहरहाल नसीर गिलानी साहब जब तक दोबारा आते हैं, डॉक्टर ज़हूर बाज़ी साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई थी। मैंने कहा था, जानना चाहा था कि किस तरह से हम को हल आप बता रहे थे, फिर दरमियान में रह गया। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर ज़हूर बाज़ी के नहीं हैं? ओके, वी मूव ऑन टू आरिफ गोहिर साहब, आर यू देयर? सर आरिफ गोहिर साहब प्लीज, वो मैं आप, मेरा ख्याल है कि आप अभी तक क्लाइमेट चेंज, नसीर गिलानी साहब आप दोबारा आ गए हैं? नसीर गिलानी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नसीर गिलानी साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तमाम साथियों को बहुत अच्छा दिन मुबारक हो, और मैं माजरत चाहता हूँ मेरे साथियों को शायद ये महसूस हुआ कि मैंने कहा मैंने अभी बात करनी। वो बहरहाल हमारा एक टेम्परामेंट होता है गवर्नमेंट का कि हम इंतजार कुछ हद तक कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। वो 50 साल में डेवलप हो जाता है, तो फिर मैं माजरत खाऊं प्रोफेसर हजरात से और स्कॉलर हजरात से। और मैं क्लाइमेट चेंज पे भी बात करना चाहूँगा, और सबसे बड़ा जो यूएन का डिकेड है उसका पाकिस्तान का प्रैक्टिकल रिलेशन क्या है। इस डिकेड में 2 ही अचीवेबल चीजें हैं। एक ये है कि 350 मिलियन हेक्टर जमीन जो खराब हो गई है, जो फॉरेस्ट खराब हो गया, उसको रिस्टोर करना। दूसरा इंडिकेटर ये है कि 13 से 26 ट्रिलियन गैगा वो हमने वापस करना है, कार्बन को रिड्यूस करना है। अब ऐसे है कि पाकिस्तान में इसमें बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा होने वाला है। कागज बहुत सारे बन गए, और मैं कागज बनाने के ऊपर खर्च करने को बिल्कुल अहमियत नहीं देता, क्योंकि उससे जो पॉलिसी बनती है और जो प्रैक्टिस है उसमें डाइवर्शन है। दे आर एट 180 एंगल्स। पॉलिसी कुछ कहती है, एक्शन कुछ कहता है। अगर आपको याद हो कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक क्लाइमेट चेंज कमीशन बनाया था, उसमें मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और हमने बताया था कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से खर्चा दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से ज्यादा, लेकिन वो तमाम खर्चा कंसल्टेंट्स और रिपोर्टों और इन चीजों पे जा रहा है, उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हम फिजिकल मीनिंग में। अगर हम फिजिकल मीनिंग में ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें फिजिकल मीनिंग में लेके जाना है लोगों को, किताबें लिखने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो जंगलात लगाने की बात हुई थी मीन असलम साहब की, मैंने उसको पसंद किया था कि एक मीनिंगफुल काम शुरू किया उसने केपीके में, और 10 बिलियन सुनामी की बात की उन्होंने। अब जहां मुझे परेशानी है वो ये है कि पॉलिसी के नतीजे में जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उनमें से प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पीछे होते जा रहे हैं, और सेकंड प्रायोरिटी प्रोजेक्ट या थर्ड प्रायोरिटी प्रोजेक्ट आगे जा रहे हैं। भाषा डैम पीछे जा रहा है, मेमन डैम आगे जा रहा है। मेमन डैम से सिर्फ 13 से 17 हजार एकड़ जमीन सैराब होनी है, जो कि बहुत, हम एक 10 अरब या 2 अरब से भी कर सकते थे। उसके लिए 300 सरकारी कीमत है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि उसकी कीमत 700 750 अरब से ज्यादा होगी। नीलम जेलम हमने शुरू किया था 90 अरब पे, 600 अरब पे भी खत्म नहीं हुआ।
تو یہ سارے کام میں افسوس کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے اور پاکستان ہمیشہ فوڈ میں سرپلس رہا ہے، اب ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کاٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے جو یہ بیسک ایگریکلچر ہے وہ بہت پیچھے چلی گئی ہے، اس میں پانی کا بھی ایک ایشو ہے۔ فوڈ منسٹری میں واٹر مینجمنٹ میں بہت ساری انویسٹمنٹس رکھی گئی ہیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کوئی پروجیکٹ نہیں چل پا رہا۔ وہ کیوں نہیں چل پا رہا؟ اب امید ایک پیدا ہوئی ہے جمشید چیمہ صاحب کے آنے کے، وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ کے، کہ جمشید چیمہ صاحب وہ شخص ہیں جو کہ پریکٹیکل آدمی ہیں۔ ہم ان لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے جو صرف تھیوری کی باتیں کریں، ہم ان لوگوں کی ضرورت ہے جو زمین پہ کام کر کے دکھائیں۔ تو زمین پہ کام کرنے کا جمشید چیمہ صاحب کا بہت بڑا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ سارے ٹھیک کر کے چلا دیں گے۔ اب جو نیکسس ہے بٹوین فوڈ سیکورٹی اینڈ واٹر، اس میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج بھی آپ نے سنا کہ 38% واٹر سپلائی کم ہو گئی، اور سندھ والے چلا رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کپاس لگانے کا وقت گزر جا رہا ہے، ہمارا تو مونجی کی فصل نہیں لگا سکیں گے، اس کی پنیری نہیں لگ رہی، ہمارا گنا سوکھ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جواب تو ریزروائر ہے، اور وہ ریزروائر والے پروجیکٹ ہم نے پیچھے کر دیا، ہائیڈرو پاور والا پروجیکٹ آگے کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اب ہائیڈرو پاور کسی زمانے میں سستی تھی، اب ہائیڈرو پاور کا زمانہ گزر گیا ہے ٹیکنالوجی کی ایڈوینٹ سے۔ اب ہائیڈرو پاور کے جو یہ پروجیکٹ بن رہے ہیں محمد وغیرہ، یہ کوئی 8-9 سینٹ کہتے ہیں، جب یہ 300 بلین پہ ہیں، جب یہ 700 بلین پہ ختم ہوں گے تو یہ کوئی 14 سینٹ کی بجلی بنے گی، جبکہ سولر کا ٹینڈر سر آ رہا ہے 3.4 سینٹ پہ، اور اس میں ٹرانسمیشن لائن کی کاسٹ نہیں ہے، اس میں ٹرانسمیشن لاسز نہیں ہے، آپ کی ایز آف آپریشن ہے، پھر وہ اس میں ٹرانسمیشن لائن کے گرنے کے اڑنے کے خطرات نہیں ہیں، آپریشنل فیسلٹی ہے۔ ہر زمانے کی ایک بات ہوتی ہے، میں ڈیم کا آدمی ہوں، میں ڈیم کا انجینئر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ڈیم بناؤ صرف پانی کے لیے، اگر آپ اس کو بجلی کے لیے بنانا چاہ رہے ہو وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ میں آپ کے ساتھی سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سب ڈاکٹر منیر صاحب بتا سکیں کہ وہ سب لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یار یہ کام غلط ہے اور یہ کام ٹھیک ہے، اس کو کیسے کریں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکورٹی، واٹر، ان تینوں کا نیکسس ہے۔ اب پہلے ہم کہتے تھے نیکسس ود انرجی، واٹر فوڈ انرجی، اب انرجی کا نیکسس سے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ جو انرجی ملے گی بھی ہائیڈرو پاور سے، اسے ہم ٹیوب ویل چلانا چاہتے تھے، لیکن 13 سینٹ والی انرجی سے ٹیوب ویل چلا کے کسی نے مرنا ہے۔ اور جہاں تک نقصانات ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ 43 کینال کمانڈ میں سے 39 کینال کمانڈ میں واٹر ٹیبل انسسٹینیبل ہو گیا پمپنگ کی وجہ سے۔ جب ہم نے پمپ کر کے اس کو اتنا نیچے لے گئے، پمپنگ کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر بھی آ گیا ہے کہ سلائن واٹر انٹروژن ہو رہا ہے، سلائن ایکویفر سے پانی کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے، سائل اس کے ذریعے خراب ہو رہی ہے، سائل پروڈکٹیوٹی خراب ہو رہی ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، ان کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ اس ساری چیزوں میں ایک ہی سولوشن ہے، وہ یہ ہے پرائرٹی۔ ارسٹاٹل نے بڑا صحیح کہا تھا when everything is a priority it means there is no priority۔ اور اگر آپ نے پرائرٹی کرنا ہے تو بادشاہ ڈیم از اے پرائرٹی، میمن ڈیم از ناٹ اے پرائرٹی۔ اور جہاں پہ آپ نے خرچے کرنا ہے غریب قوم کا، وہ خرچ کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہو، اور اس طریقے سے پیسہ آپ نے ادھار لینا ہے جو سب سے کم سود پہ مل سکے۔ ساری دنیا میں ادھار لینے کے لیے منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، نہ کہ کنزیومر۔ اب بابڈا جو بانڈ جاری کرے گا، بابڈا کا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ پیسے آ جائیں، واپس تو کسی اور نے کرنے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم انسٹیٹیوشن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انسٹیٹیوشن ہے منسٹری آف فائنانس، انسٹیٹیوشن ہے اسٹیٹ بینک، انسٹیٹیوشنل کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں آخری ایک بات کروں گا کہ ہمیں بار بار بات کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہوا ہے کہ میں نے اس کی باری کو آگے پیچھے کر دیا تو میں ایک بار پھر معذری چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ میرا مقصد آپ لوگوں سے دوستی کرنا ہے، اور میں کوئی یہاں آپ کو تعلیم نہیں دے سکتا، آپ سے بہت کم پڑھا لکھا ہوں۔ لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی پالیسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک جھوٹی قوم ہے، بات کچھ کرتے ہیں پریکٹس کچھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ نصیر گیلانی صاحب۔ کوئی یہاں پہ کوئی کم پڑھے لکھے ان کی بات نہیں ہے، اور پرائرٹی تو بہرحال آپ ہی کی تھی، اور ایز اے پینلسٹ، اور ہم آپ کو 2-3 دفعہ ہم نے آوازیں بھی دیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ یو کوڈ ناٹ ہیئر اس، اور تو آپ کو کوئی ساؤنڈ سسٹم کا کوئی پرابلم بھی تھا۔ بہرحال سب دوست ہیں، کوئی کسی کا ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے۔ سمیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، برمنگھم یونیورسٹی سے ہیں، جی ادھر سے، اور
सॉरी नसीर गिलानी साहब। बहरहाल थैंक यू, वंडरफुल। और बहुत सारी जो है हमारे पास इस वक्त आई है। मैं एक तो मैं इससे बड़ा परेशान होता हूँ कि जो दरमियान में माइक अनम्यूट हो जाते हैं उनके कि जिन्होंने बात नहीं करना है। और अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लिए कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप लोग ज़रा अपने माइक जो हैं अगर म्यूट ना करें तो बेहतर है, और जब आपसे रिक्वेस्ट की जाए तो तब आप वो कर दें। आरिफ गोहिर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरे ख्याल वो तो जा चुके हैं। और समीउल्लाह साहब यूनिवर्सिटी जी मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, आप अवेलेबल हैं? अच्छा, अवेलेबल है। मेरे ख्याल आरिफ गोहिर साहब, मैं क्या पहले आपका वो हम नहीं ले पाए थे नाम, यू आर स्टिल वर्किंग विद ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर आई बिलीव। जी सर, ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर के साथ आपकी तहकीक क्या कहती है आज के टॉपिक के हवाले से? कोई बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, कुछ सॉल्यूशंस की तरफ, बाकी बातें तो हमने सुन ली। बहुत अच्छी बातें हुई जी। कुछ थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए GCISC का अपना काम है, और पाकिस्तान में सबसे पहला काम है ये जो हमने क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट असेसमेंट्स की हैं। तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर का सेक्टर्स जो है वो सफर कर रहा है। अगर मैं हमारे GCISC सेंटर की कुछ फाइंडिंग्स के बारे में बताऊं तो जो क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं कि जी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ये जो टेम्परेचर है ये 4 डिग्री तक बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान में 5.1 डिग्री तक बढ़ेंगी, यानी कि तकरीबन 1 डिग्री हायर देन द ग्लोबल एवरेज। अभी पिछले दिनों हमने एक और स्टडी की है जो ये कहती है 1.5 डिग्री सिनेरियो में कि दुनिया में 1.5 डिग्री सिनेरियो अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस कब आएगा। तो स्टडी सेज के 2045-46 में ये जो है वो 1.5 को हम टच कर जाएंगे। लेकिन परेशान कुन बात ये है कि पाकिस्तान में हम तकरीबन 10 साल पहले, 9 साल पहले, यानी कि 2036-37 में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द you can say in terms of temperatures. बाकी आप अगर प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो स्टडीज हमारी ये कहती हैं कि जो हमारे एरिड और हाइपर एरिड एरियाज हैं, जैसा कि अभी ज़हूर बाज़ई साहब ने भी फरमाया कि वो मजीद एरिडिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर मैं पिछले जब से मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी में अपनी सर्विसेज का आगाज किया, एक बात शदोमत से मैं देख रहा हूँ, हमारी इकोनॉमी वही 4-5 क्रॉप्स के गिर्द घूम रही है। इतने ज्यादा रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्सेज को। होता तो ये कि शायद हम कोई एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुके होते। नेट फूड सिक्योरिटी जो इम्पोर्टर हैं, हम फूड अब भी इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगाते हैं, एनर्जी इंटेंसिव क्रॉप्स लगाते हैं, फिर रिजिलियंस भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज एडिंग टू द वेगेरीज। अभी मैम ने एक बात की कि जी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स होंगे, तो शी इज वेरी राइट। अभी हमारी एक स्टडी पिछले साल लॉन्च हुई है, तो मेज की जो प्रोडक्शन है इट इज गोइंग टू सफर अराउंड 30% बाय द एंड ऑफ 2050। सो इट इज वेरी अलार्मिंग। सेम इज हैपनिंग विद व्हीट, सेम इज हैपनिंग विद राइस। कॉटन की मिसालें आपके सामने हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स की तादाद जो और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। प्लाजेबल सोल्यूशन सर की आपने बात की, तो हमें रिसर्च को पॉलिसी के साथ और एक्शन के साथ इंटीग्रेट करना है। खामखा की जो अडेप्टेशन की हम बातें करते हैं, जब तक वो कहते हैं कि मैं ये कहा करता हूं कि जब तक जख्म की गहराई का तयन ना कर लिया जाए उसके ऊपर कोई भी दवाई, कोई भी मरहम जो है वो बेमानी होगा। आज की अडेप्टेशन हो सकता है माल अडेप्टेशन की तरफ जा रही हूँ। माजी में हमने देखा यूकलिप्टस की बातें की, हमने इस्लामाबाद की वेजिटेशन की बातें की, वो वक्त ने उनको माल अडेप्टेशन के तौर पे साबित किया। अब शायद कुदरत हमें किसी मजीद माल अडेप्टेशन का मौका ना दे। एग्रीकल्चर को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। स्पेशली हमें इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए अडेप्टेशन को बेनिफिट्स की तरफ जाना चाहिए, यानी कि वो प्रैक्टिसेस जो हमारी एग्रीकल्चर को अडेप्टेशन की तरफ भी लेके जाती हैं और हमारे रिसोर्स जो हैं उनकी सेविंग भी करती हैं। वाटर इज फॉर एग्जांपल जो वन थिंग कि हमें वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इतने सालों की काविश के बावजूद आई डोंट नो कि किस हद तक हम वाटर एफिशिएंट हुए हैं।
इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैं अगर राइस की कल्टीवेशन की बात करूं, अगर हम ड्राई सोइंग की तरफ चले जाएं तो तकरीबन 7 मिलियन टन के इक्विवेलेंट जो है वो CO2 इक्विवेलेंट जो एमिशंस हैं वो राइस से हो रही हैं, मीथेन की एमिशन जो है। अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान के रिवाइज्ड NDC के लिए अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री मुकम्मल की है, एंड इट टेल्स के अराउंड 46.something% emissions are from agriculture, forestry and land use। 490 मिलियन टन की हमारी एमिशंस हैं, जिसमें से 234 के करीब जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज एमिशंस हैं। तो की पॉइंट मेरा ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, हमें वाटर यूज एफिशिएंसी को एनहांस करना है, और स्पेशली रेजिलियंस के को बिल्ड करने के लिए अडेप्टेशन को बेनिफिट्स की तरफ जाना है, जो ना कि हमारे रिसोर्सेज को सेव करें बल्कि हमें अडेप्टेशन और रेजिलियंस की तरफ भी लेके जाएं। थैंक यू मुनीर साहब। थैंक यू आरिफ गौहीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे पास 2-4 और इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू आवर क्लोजिंग टाइम ऑफ द वेबिनार, तो थोड़ा सा मुख्तसरन अपना जो बुलेट पॉइंट्स के अंदर, यानी मुख्तसरन सॉल्यूशंस की तरफ जो है उसकी तरफ हमें बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। निगत हसनैन साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। निगत हसनैन साहबा, यू आर अ न्यू स्पीकर। आपने मुझे कुछ बताया था कि वेयर विच यूनिवर्सिटी यू आर फ्रॉम एंड about, but I could can you introduce yourself again and talk about the solutions that we are talking about? Okay, so I think Assalamu alaikum. Thank you very much for inviting me. I don't work for any university now. I work. निगत साहबा, एक थोड़ा सा जरा आप पीछे को थोड़ा सा हो जाएं, जरा जूम आउट करें कैमरे को और अपने आप को, ताकि आप यस थोड़ा सा और बेशक हल्का सा पीछे हो जाएं, ताकि आप ज्यादा बेहतर नजर आए, क्योंकि इस वक्त रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना हमारी, तो हम जरा वो रखते हैं कि जरा फ्रेम जरा ठीक रहे। प्लीज गो अहेड। अब ठीक है, प्लीज गो अहेड। Okay, so my background is in environmental policy. I did my PhD from Imperial College in London, and since then I was always working with policymakers. मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि जो पॉलिसी बनती है और जो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होते हैं उसमें बहुत फ़र्क है, यहाँ पे भी, UK में भी और दुनिया भर में भी ये इश्यूज हैं. So since then I left all that, started my own organization, and have been working with farmers on the ground, learning from them, and actually trying to see what actually needs to change and how can we bridge the gap between policymakers and people who are practitioners. So what is the learning? So one of the things we are looking at, how do we look at a whole system approach? In you improve livelihoods, but you also regenerate the land. So I'm looking at regenerative agriculture, looking at agroecological processes, how we can implement them on the ground. और उसी हवाले से मैं projects भी कर रही हूँ, और मेरा एक plan भी है project पाकिस्तान में करने का, which I'm just developing right now. मगर उसमें यही है कि you work with local communities. We don't want sustainability, because what is there is really something not worth sustaining. क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में उसको हम सस्टेन करेंगे तो ये it doesn't help. We have to regenerate. We have to improve the land. We have to increase the ground cover. We have to improve our soils, water, everything. So that's what I'm looking at. But I'm really interested in practical solutions. और उसके लिए I've been to Africa, worked with people like Alan Savory. मैम, that's wonderful. मैं सिर्फ अब ये कहूँगा कि बुलेट पॉइंट्स में आप कोई 2-4 सॉल्यूशंस जो है, आपने इतना सारा जो काम किया है, what is the learning from the work you have done with the farmers? Okay, yeah, please go ahead. Okay, so I think you should really listen to the local people, जो उनका context है, जिससे वो आते हैं, जो उनके problems हैं, and we have to have a very systemic approach to addressing those problems. I think there have been some very good comments made by everybody else, but what I will just add here is that आप एक system के approach से देखें, उनके जो multiple issues, socio-economic, environmental जो भी issues हैं, वो आप समझें सही तरह, और फिर उनसे लेके चलें आगे, क्योंकि ground पे change तो वही लेके आएंगे. And I think we've got to really listen to them. People coming from universities tend to think उनको बहुत उन्होंने PhD कर ली ये सब. I mean, I've done a PhD, but I think people who work on the ground have a deep knowledge which goes back centuries. So we need to value that. Okay, thank you very much. We have Dr. Zagam Khan Saba with us. She has been working with the Planning Commission. If Zagam Khan Saba is around with us or has left. I don't see her. Okay, fine. Tahir Imran Sahab, are you there?
I could see Tahir Imran a while ago, but I don't know. He's not also there. Fine. Okay. Now I think time is over for the webinar, and we have heard almost all the panelists and some other experts who are present here, and they have come up with like wonderful points to ponder, and I believe it would be nice way forward that we need to have some action plans, and our Murshid Ashir Ahmed Khan Sahab is still with us, and I would request him to conclude the webinar with some remarks, and आशिक अहमद खान साहब आप हैं अभी उधर? जी आशिक साहब जरा बताएं कि अभी जो हमने सारी गुफ्तगू की इसका निचोड़ क्या बनता है हमारे सुनने वालों के लिए। एक्सपर्ट्स ने तो नोट कर ली हैं, और आसान जुबान जो आप जो कहते हैं कि आसान जुबान में एक्सपर्ट्स का भी कि क्या हमें हल नजर आते हैं, और उसमें जो 22-23 करोड़ लोग जो हैं, क्योंकि चंद एक्सपर्ट्स और उनसे भी गवर्नमेंट की मशीनरी तो कोई इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक 22-23 करोड़ लोग इस बात को समझने की कोशिश ना करें। आशिक अहमद खान साहब। थैंक यू सो मच। बात यह है कि अभी आखिरी जो स्पीकर थी निगत साहिबा जी जी, उन्होंने सारी बातें काम की, लेकिन जो बात आपके 22 करोड़ और 20 करोड़ को एप्लीकेबल है वो वही है कि हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, दैट्स इंडिजिनस नॉलेज। अब ये इंडिजिनस नॉलेज इन्हीं लोगों के पास है जिनके साथ बैठ के हमने काम करना है और जिनको हमने आगे लाना है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ऊपर से कोई नई चीजें लाकर उनको सिखाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। सॉरी आशिक साहब, ये हमारे अहबाब जो हैं बार बार बताने के बावजूद भी उसको वो म्यूट नहीं करते हैं। चलें, बहरहाल गो अहेड आशिक साहब प्लीज। कोई बात ऐसे नहीं है। एनीवे, तो इन्होंने जो बात की मैं उसी को जरा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि एक वक्त था कि जब मैंने सिर्फ इस पर काम किया कि पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट क्लाइमेट चेंज क्या है एंड व्हाट अडॉप्टेशंस डू दे सजेस्ट। ऐसे अस्टॉनिशिंग फैक्ट सामने आ गए कि मैं खुद हैरान हो गया। उनको यहाँ तक पता था कि कितने दिनों का फर्क पड़ा है मौसमों में, फिर कौन सा साल जो था तो वो उसे अब नॉर्मल समझते हैं, कौन सी जगह जो है तो क्या तब्दीली आ गई, यहाँ तक कि ग्लेशियर रिट्रीट से किसी जगह में कौन सा इम्पैक्ट हुआ और उनके पास अडॉप्टेशन के लिए क्या था। और उन्होंने साफ ये कहा कि हमें किसी पैसों की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट आवरसेल्व्स, हमें सिर्फ कुछ चीजें समझाई जाए। अच्छा, ये जो बात है ना ये एप्लीकेबल है टू द 22 करोड़ आवाम। आपको हर जगह यही चीज नजर आएगी। हमारे पास कमी किस चीज की है? कमी इस बात की है कि लोगों तक वो बात पहुंची नहीं कि विजिल कैसे अरेंज किया जाए फॉर इकोसिस्टम गवर्नेंस। जब तक गवर्नेंस नहीं होगी इकोसिस्टम के, ना आपका पानी महफूज है ना आपकी दूसरी सप्लाईज महफूज है। तो बात यह कि इनमें से हर एक ने, गिलानी साहब ने भी जो दरमियान में कुछ अगरचे जरा से गुस्से में थे, लेकिन ये है कि गुस्से को एक तरफ रखकर उन्होंने जो काम की बातें की वो जबरदस्त थी। मेरे पुराने दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराना है, लेकिन दोस्त मेरा पुराना है सिर्फ। लेकिन ये कि इसी तरह जो है तो आरिफ भाई ने बड़ी अच्छी सॉल्यूशन दी। मेरा अपना ख्याल ये है कि अब मुनीर भाई आपके पास एक वक्त है कि इन सब चीजों को इकट्ठा करके, मैं बेशक आपके साथ हूँगा जब भी आपको जरूरत होगी, करीब बैठूंगा इस्लामाबाद में जिस दिन आप कर सकते हैं, और हम इनको यकजा करके इन्हीं पर बुनियाद बनाकर एक एक्शन प्लान बना देते हैं एंड लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल क्वार्टर्स, ताकि वो जो है ना वो देखें कि अब अपनी प्रायोरिटीज असल में उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। प्रायोरिटी जैसे शायद नसीर ने कहा कि जिस मुल्क की अपनी जिसकी सब प्रायोरिटीज हो, प्रायोरिटी वाले है ही नहीं। तो अब ये है कि हमारे पास ये चीज सामने आ रही है कि हमें इन्हीं फाइंडिंग्स को जो कि हमारे स्पीकर्स ने आज दी हैं, इन्हीं को यकजा करके बेस्ड ऑन दिस वी कम अप विद एन एक्शन प्लान
और वो एक्शन प्लान पर इंशाल्लाह हम अगली किसी सेटिंग में डिस्कस कर लें और जब जनरल कंसेंसस आ जाए तो दैट कैन बिकम अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट. थैंक यू वेरी मच. Okay, thank you very much. With this, I would like to conclude, but if anyone of from the participants, if you have a question, please ask, because we have a couple of experts around with us. Please, किसी को कोई सवाल, कोई जवाब, कोई है, कोई सब कहने हैं क्वेश्चन. सर एक मिनट जाफिर साहब, आपने कोई सवाल जाफिर साहब है? मेरा सवाल है. जी जी, प्लीज प्लीज सवाल आप कीजिए. जाफिर साहब मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, मुख्तलिफ एसडीजीज के ऊपर काम कर रहे हैं और आईटी और आईओटी इसके ऊपर काफी इन्होंने काम किया है. प्लीज गो अहेड अमर जाफिर साहब. My name is Amar Jafri. I'm a former additional DGFI. Currently, I'm doing something in SDGs. I'm afraid nobody talked about SDG 13, which is have a definite goals, definite target, definite indicators. And I see a great value in implementing the SDG goals. And interestingly, 5th June is the Global Climate Environment Day. And I think we need to join hands together. Actually, I see very less performance at the government level in promoting the year 2021, which is again eco sustainability in June 5th. I think all of you should work together and promote whatever is happening in Pakistan to tell the world that what we are doing in climate change. Thank you very much. Okay, जाफिर साहब, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी बात है, सबको मिलके काम करना चाहिए. और यहाँ पे यही सूरत हाल है कि हमारी तो कोशिश होती है कि सारे लोग आए, मिलजुल के काम करें. कोई और साहब या साहिबा जो हैं, if like to offer any comment or put up a question. I don't see any hand raised. So with this, I will request to all of you, please share your number on my cell number so that हम आपको loop में रख सकें, and we have to be in the loop for our whatever we do and share with others. With this, I would request you to join for our next webinar. That will be on June 3rd, and we will be looking forward to a certain case studies, as we have requested Sama Kadir Sahiba to stop sharing the case study of Costa Rica and Balochistan and Sindh. And I hope like Dr. Zahur Bazai Saab would have a wonderful case study from Pakistan. And we will be having different case studies from Pakistan and other countries as well. And some from Nepal and India. And there is a Desert Resource Center in India, and they are doing wonderful things. And we also have a couple of organizations working in our part of Thar, and we would also request them. There are several organizations working on mountain issues and in mountain areas, and they have wonderful case studies of ecosystem restorations. So इस तरह के जो हमारे 11 इकोसिस्टम्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि कुछ केस स्टडीज पाकिस्तान से आ जाएं जून 3rd को, और कुछ जो हैं वो हम दूसरे मुल्कों से. और इसमें चूंकि आपके पास मेरा तकरीबन सभी के पास मेरा नंबर होगा, तो व्हाट्सएप जरूर करें कि इफ यू नो समवन जो किसी दूसरे मुल्क से, कुछ चीन से, अफगानिस्तान से, ईरान से, नेपाल से, भूटान से, मालदीव से, इस तरह कोई अगर अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट कर सकते हैं, इवन यूके से कोई कर सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर सकता है, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा. क्योंकि हम ये चाहेंगे कि इन केस स्टडीज से, जैसे आज हमने बहुत सारा लर्न किया, और जैसे आशिक अहमद खान साहब ने कहा कि अगर इन रिकमेंडेशंस को जमा कर लिया जाए तो ये एक अच्छा एक्शन प्लान बन सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ द इको सिस्टम रेस्टोरेशन पैकेज. तो इसमें हमारे लिए इस तरह वो जो केस स्टडीज होंगी वो भी एक हेल्पफुल होंगी हम सबके लिए, अगर हम उनको सुनेंगे और उनको कोलेक्ट करके एक उसमें से कोई अपने लिए लाया अमल बना सकें. इन बातों के साथ आई वुड थैंक यू to all the panelists who spare their time, their knowledge
اور میں اس کے ساتھ اور بھی جو ہمارے احباب ہیں جو پارٹیسپینٹس جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ اس وقت موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت 3 جون تک کے لیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ مزید دوستوں کو بھی اپنے ساتھ اگلے ویبینار کے لیے لے کر آئیں تاکہ ہم زیادہ بڑی ایک ٹیم جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوں، تاکہ ہم نالج شیئر کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیے، انجوائے کیجیے گا اپنے ویکینڈ۔ اللہ حافظ۔